Sure. Good afternoon, everyone. Good evening. Okay. In last lecture, we learn about Euclid's division algorithm. Okay, everyone. Last lecture, we learned about Euclid's division algorithm. Now, in this lecture, we will learn next. What is the Euclid's division algorithm? We learn about that. Now, first of all, something we at the starting we revised our Euclid's division algorithm. What Euclid's division algorithm say? What we learned in last lecture and whatever. See here, Euclid's division algorithm. Euclid's division algorithm. You know that what is Euclid's division algorithm? All of you know that. Means if you divide one number by another, then at that time you use Euclid's division algorithm. Okay. Here, when you divide A by B, then you get quotient Q and remainder R. So at that time, you use this. How we get A? A is equals to B into Q plus R. So it is your Euclid's division algorithm. When you divide some number by another, then how you write that dividend? A means N01 as dividend. Dividend is equals to B known as divisor into Q known as quotient and plus R known as remainder. Okay, students, it's your Euclid's division algorithm. By using this, you can find out the HCF of two numbers. In last already you learned about this type of examples. We solved two examples based on that. We find out two examples of Euclid's division algorithm. Okay. Now in this lecture we learn about another examples. Okay. So next. Okay. In your NCERT textbook, you can see exercise 1.1. 1.1, question number 1. Exercise 1.1, question number 1. First example. See, find out by Euclid's division algorithm in that exercise 1.1, question number 1. Example 1 is that use Euclid's division algorithm to find the HCF of 135 and 225. We have this question in our textbook that find out this HCF of these two numbers. Okay. So how we can find? You know that larger number divided by smaller and write it in this form. Dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. So now we divide
225 by 135. Okay, we divide 225 by 135. So here 225 divided by 135. So directly we write like this: 225 divided by 135. So 135 ones are 135. Because of 135 twos are, if we multiply by 2, then answer is 270. So it's greater than 225, so we can't divide by 2. So 135 into 1. Okay. Now subtraction: 5 minus 5, 0. 22 minus 13 directly 9. So answer is 90. So our quotient is 1 and remainder 90. So 135 into 1 plus 90. Okay. Now we go for the next. Now take this 135 as a dividend and 90 as a divisor. Okay. Now divide 135 by 90. So 90 ones are 90. Subtraction. Okay. So 135 minus 90. If you can't subtract, then listen one thing. How we can subtract easily? Here, see. We want 90 subtracted from 135. So first of all, reach to 100. How much you want to reach 100? 10. Okay. From 100 to 135. 35 you want. So plus 10 and plus 35. How many? Plus 45. So your answer 135 minus 90 is 45. If you want your subtraction directly, then you can do like this. Okay. If you want your subtraction process directly, then you can do like this. अगर आपको आपके subtraction direct चाहिए, आप ऐसा कर सकते हो. अगर आपको ऐसे नहीं करना है कि भाई 5 minus 0 5, 3 minus 9 we can't subtract, 3 में से 9 नहीं जा सकता है, तो क्या करेंगे? ऊपर 13 लिखेंगे और यहाँ पर 0 को कैंसिल कर 1 को कैंसिल करके 0 लिखेंगे. 13 minus 9 क्या होगा? 4. ऐसा नहीं करना है तो डायरेक्ट लिख दो भाई प्लस 40. नाउ 135 डिविडेंड इज इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई बाय 1. तो 90 इंटू 1 प्लस 45. ओके. ये हो गया नेक्स्ट स्टेप. अभी आपको पता चला कि अभी भी आपको रिमाइंडर को नहीं मिला. Up to here we haven't get a remainder 0, so we further divide this 90 by 45. So 90 divided by 45. Okay. So 45 twos are 90 and remainder becomes 0. So 90 is equals to, this is equals to multiplication of this both and plus this. Okay. So 45 into 2 plus 0. So you get a remainder 0. At that time your divisor is your HCF. So HCF of 135 and 225 is equals to 40. Okay. At that time your divisor is your HCF. Okay everyone. So you get HCF of 135 and 225 is 45. Okay. Now next.
सेकंड एग्जांपल देखो, सेम टू सेम ऐसा ही है। सेकंड 196 and 38,220 ऐसे कई सारे बच्चे हो गए जो क्वेश्चन देख के ही डर जाए। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो क्वेश्चन देख के ही डर जाएंगे। ओके, क्यों? तो पता है भाई क्यों डर जाओगे। सी, अगर आपको डिवाइड करना है 38,220 को 1996 से, ऑब्वियसली कोई भी होगा डर जाएगा। हाउ वी कैन डिवाइड दैट 38,220 by 196? लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, बहुत बड़ी प्रोसेस होगी। डोंट डू लाइक दिस, डिवाइड एज योर स्टैंडर्ड 4 and 5। आप जो स्टैंडर्ड 4 and 5 में डिवाइड करते हो, सेम प्रोसेस, डिवाइड दिस नंबर बाय 196। You know that if you multiply 192 2, so 380. So obviously 192 multiplied by 2 obviously greater than 382. So 192 ones are 196 ones are 196. Now 382 minus 196, आपको 382 में से 196 माइनस करना है। कैसे? इससे वो ही आ गया। चलो 196 से 382 तक पहुंचना, तो पहले 200 तक जाओ, कितना होगा +4। वहां से 300 तक जाओ, कितना होगा +100। वहां से 382 तक जाओ, कितना होगा +82। so 100 plus 82, 182 and +4, so 186। it's a simple process to subtract। ये भाई आपकी सिंपल प्रोसेस है सब्ट्रैक्शन की। यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ, और लास्ट में आपको सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा। ओके, go from here to here, here to here, so at the end you will get the answer of subtraction। okay everyone, is it clear? okay, now next take 2 lower here ले लिया। अब क्या करना है, डिवीजन बाय 196 मल्टीप्लाई बाय क्या करो तो 1862 तक आ जाए। सो 196 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 1960 से बड़ा हो गया, तो 9 196 इंटू 9, फिर से सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। 9 6 54, तो 4 5 8, 9 9 81 plus 5, so 86, so 8 k, 9 1s are 9 plus 8 17, so 1764 less than this, so 196 multiplied by 9, 1760। okay, now next subtraction, same subtraction, 1764 to 1862, so 1800। okay, then from here, so here we want plus 62, and from here to here we want plus 36। okay, so addition of this both 60 plus 30, 90 plus 8, so 98 and 0। okay, plus 98 and 0 over, so 9
980. Now next, 196 multiply by which? So we get 980. You know that 6 multiply by 5, then and then we get 0. So see 5. 6 5s are 30. 9 5s are 45 plus 3 48. 4. 5 1s are 5 plus 4 9. So 980. So we get answer 980. So 196 multiply by 5. So 980. So directly 338,220 is equals to 196 multiplied by 195 plus 0. Remainder 0. Yeah. Okay. So at the starting you get remainder 0. Okay. So at that time your divisor is your HCF. So HCF of 196 and 38,220 is equals to 190. And everyone, it's your answer of this example. Okay. Now we will move next. Now we go directly for question number 2. Question number 2. See, show that any positive or integer, any positive or integer is in the form, any positive or integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 1 and 6q plus 3 and 6q plus 5, where q is an integer. Q is an integer. Okay, any positive or integer written as 6q plus 1, q plus 3 and 6q plus 5, where q is an integer. Okay students, now before this example we learn something for you. Now see, चलो आपको कोई भी एक इंटीजर लिखना, कोई भी इंटीजर सोच लो कि चलो मुझे एक इंटीजर लिखना है, तो कौन से फॉर्म में लिखूं, कौन से फॉर्म में, तो कौन से फॉर्म में लिखा जाता है उसके लिए आपको पहले उसको डिवाइड करना। चलो आपको कोई एक एक्स इंटीजर लिखना, कौन से फॉर्म में लिखना है, तो आप उसको किससे डिवाइड करते हो, द नंबर दिस इंटीजर एक्स divided by which number depends on that the form of x. Okay, the form of x depends on the number divisible which divide x. Okay, x, चलो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, मुझे x के बारे में नहीं पता, I don't know about the number x. Number x can be 1, 2, 3, 4, 15, 17, 19, 1000, 1007, 1781, whatever. X can be any number. Don't know about the number x. Okay. So here we get quotient m. Okay, and remainder must be 0 and 1 because of this divisor. You know that remainder must be started from 0 and must be less than divisor. Divisor 2 है तो रिमाइंडर 0 से स्टार्ट होगा और 2 से तो कम ही होगा, तो 0 या तो 1 ही हो सकता है। x को 2 से डिवाइड करो तो क्वोशंट m मिलेगा और रिमाइंडर या तो 0 या तो 1 मिलेगा। तो x को क्या लिखोगे, तो 2 इंटू m प्लस 0, या तो x को ये लिखोगे 2 into m plus 1,
2m plus 0 means 2m. Okay, so you can write x as a 2m or x as a 2m plus 1. अगर भाई कोई एक बोलता है कि चलो मुझे क्वोशंट m नहीं लिखना है, मुझे क्वोशंट m नहीं लिखना है, मुझे q लिखना है, then by x is equals to 2q and x is equals to 2q plus 1. अगर आपको क्वोशंट m नहीं लिखना है, आपको क्वोशंट q लिखना है, लिख सकते हो, m की जगह पर 2q हो जाएगा. Nothing will change. Only in the place of x and only in the place of m there will be a q. Okay, अगर चलो आप 3 से डिवाइड करते हो, सेम थिंग्स हैपन टू 3. 3 से डिवाइड करते हो कोई भी नंबर को, 3 से x को अगर आपने 3 से डिवाइड किया तो उसका क्वोशंट मिलेगा q एंड रिमाइंडर क्या मिलेगा, या तो 0 या तो क्या मिलेगा 1 और या तो 2. ओके, रिमाइंडर उसका मिलेगा या तो 0 1 या तो 2. 3q plus 2, 3q plus 0 written as 3. ओके, अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो 4 से डिवाइड करते हो तो चलो आप 4 से डिवाइड करो. जैसे कि x को 4 से डिवाइड किया तो क्वोशंट q मिला. when you divide x by 4 then you will get quotient q and remainder 0 1 2 3. okay, starting from 0 and less than 4 so up to 3, 0 1 2 3. so 4 into q plus 0 is remainder. When you get remainder 0, 4q plus 0. When you get remainder 1, so 4q plus 1. When you get remainder 2, so x is equals to 4q plus 2. And when you get remainder 3, so x is equals to 4q plus. Okay, same things happen in 5. When you divide x by 5, same things will be happened in 5 when you divide x by 5. जब अगर आप x को 5 से डिवाइड करते हो सेम थिंग्स होगी. 5q plus 0, x is equals to 5q plus 1 और x is equals to 5q plus 2, x is equals to 5q plus 3 और x is equals to 5q plus 4. Why? When you divide some numbers by another means 5, at that time you will get remainder 0 to 4 only. When you get any number by 5 then you get remainder 0 to 4. okay, same things will be happen in 6. when you divide x by 6 then 6q plus 0 remainder 0. when you get remainder 1, so 6q plus 1. quotient always q. x is equals to when you get okay, when you get remainder okay students, when you divide x by 6 at that time you get remainder 0 or you can get remainder 1 or 2 or 3 or 4 और 5. आपको रिमाइंडर 0 to 5 मिल सकता है. यहाँ पर वही क्वेश्चन है आपके लिए. ओके, आपके लिए यहाँ पर वही क्वेश्चन है.
फिर से एक बार क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन है? कोई भी odd integer, odd integer, any positive odd integer written in the form 6q plus 1, 6q plus 2 and 6q plus 3, where q is an integer, q also integer. So you can say that at this time the number is divisible by 6 because 6 divisor, q quotient, and 1, 2 and 3 remainder. So at that time you can say that q is divisible by 6. So by Euclid's division algorithm, you must be apply Euclid's division algorithm, then and then you will get 6q plus 1 form, 6q plus 2 form and 6q plus 3 form. So now right answer for Euclid's division algorithm, you know that you want A, B, okay, A and B. A means any number and B means divisor, but divisor is here 6. So let A be any positive integer, let A be any positive integer and B is equals to 6. B is equals to 6. A is any positive integer, कोई भी positive integer है, we don't know about A, but we know about B. Why? We want this form, so B must be 6. Okay, so B is equals to 6. Then by Euclid's division algorithm, you can write 5. Then by Euclid's division algorithm, division algorithm, by Euclid's division algorithm, you can write A is equals to BQ plus R, BQ plus R, where B is equals to BQ plus R. Therefore, A, B is equals to, you know that B is equals to 6. So 6Q plus R, where R means remainder, but R means remainder. And remainder must be greater than or equal to 0 and less than B. So remainder must be greater than or equal to 0 and less than B means 6. Remainder is from 0 to 6. Therefore, R is equals to 0, 1, 2, 3, 4 and 5. The value of R can be written as a 0, 1, 2, 3, 4 and 5 because of R started from 0 to 6. Okay. When we write value of R 0, then we get 6q plus 0. Okay. So when you write R is equals to 0, A is equals to, see here, A is equals to 6q plus R. Put R is equals to 0. Okay. 6q plus 0 is equals to 6q. 6q can be divided by 2. We want to find odd integer. See, we want to find this odd integer. हमें odd integer find करना है. Odd means which is not divisible by 2 and even means which is divisible by 2. So define that this number is divisible by 2 or not. So 6q plus 0 means 6q. Is it divisible by 2? When we can write it as a factor of 2, then and then it can be divisible by 2. अगर कोई भी number
हम दो के फैक्टर में लिख सके, मीन्स कोई भी नंबर हो, चलो उसको हम ऐसे 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, देन एंड देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगर कोई भी नंबर ऐसा लिख सके, चलो 6, 6 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 से डिविजिबल है। 7 नहीं लिख सकते भाई, कोई भी नंबर नहीं है यहाँ पर, तो 2 से डिविजिबल नहीं। अगर कोई भी नंबर को 2 के मल्टीप्लिकेशन में लिख सके तो 2 से डिविजिबल है। इफ एनी नंबर इज written as a product of 2, then number is divisible by, तो यहाँ पर भी चेक कर लो भाई, 2 के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो, हाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों है, तो इवन है या ओड है भाई, इवन है, इवन इंटीजर इवन है, okay? क्या है, इवन है, ओके। नाउ चेक, r is equals to 1, a is equals to 6q plus 1. Can you write it as a multiplication of 2 as a product of 2? टू के प्रोडक्ट में लिख सकते हो, नहीं, we can't write it as a product of 2, हम इसको 2 के प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते, तो you can say that it is a odd number, नहीं लिख सकते, odd है। if any number is in a product of 2, then even number, not in the product of 2, odd number, simple। क्यों, odd number means not divisible by 2, not divisible by 2 means not in the product of 2। now r is equals to 2, then a is equals to 6q plus 2, can be write as a product of, yes, take 2 common from this both, 2 common ले, चलो यहाँ से 2 कॉमन आया, सो 2 3 जा 6, सो 3 बच गया, 2 रिमेनिंग and plus 2 common, so 2 1s are 2, so 1 remain, so as a multiplication of 2 into 3q plus 1, so is can be expressed as a product of 2 and 3q plus 1। here you can see that, whenever you take r is equals to 2 means remainder 2, then a expressed as a product of 2 and 3q plus 1, so a can be divisible by 2 because as a product of 2, so a can be divisible by 2, so a is a odd one number, any number is divisible by 2, then one, so one number. Now r is equals to 3, a is equals to 6q plus 3, can you write as a multiplication of 2? Na by na, no, I can't, we can't take 2 as a common or multiplication of 2, यहाँ से 2 कॉमन भी नहीं ले सकते, मल्टीप्लिकेशन में 2 लिख भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ओके, 2 कॉमन भी नहीं ले सकते, 2 के मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं, ये क्या हो गया, ओड, इज ओड, दिस इज ओड, सेकंड। नाउ r is equals to 4, a is equals to 6q plus 4, okay, a is equals to 6q plus 4, नाउ टेक 2 कॉमन, चलो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, हाँ ले सकते, 6 में भी 2 है, 2 3 जा 6, and in 4 also there are 2 common, so 2 3 जा 6, so 3 and q remaining plus 2 4 जा 2 2 जा 4, so 2 2 जा 4, so whenever you take r is equals to 4, a can be written as 2 and multiplication by 3q plus 2, so it's odd number, even number, why, because it is the product of 2, and if any number is product of 2 then it divisible by 2. Now next, when you take r is equals to 5, a written as
plus 5 is written as 6 cube plus 5. Okay, 6 cube plus 5, we can't take 2 common, we can't write it as a product of 2. हम इसमें से 2 भी कॉमन नहीं ले सकते, उसको 2 के प्रोडक्ट में भी नहीं लिख सकते, तो ये क्या हो गया, ओड नंबर। ओड नंबर एक ए ओड हुआ, देखो ए ओड हुआ, ए ओड और ए, तो 3 ओड हुए। कौन कौन से, 6 क्यूब प्लस 1, this is 6 cube plus 2 and this is 6 cube plus 5. So write last sentence. Therefore, any odd positive integer integers is of the form कोई भी और पॉजिटिव इंटीजर कौन से फॉर्म में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 क्यूब प्लस 1, ओके 6 क्यूब प्लस 1, second one 6 cube plus 3 and last one 6 cube plus 5. Okay, or in the board exam also, listen students carefully, in the board exam also they can ask that write any even positive integer is the form of 6 plus 2, 6 plus 2 and 6 plus 4. हे भाई हे, हमारे पास उसका भी प्रूफ है, देखो इवन 6 क्यूब, second even 6 cube plus 2 and third even 6 cube plus 4. So we can write another statement also that any even positive integers, one positive integers is of the form 6 cube plus 2 and 6 cube plus 4. Okay, so any even positive integer can be written as 6 cube plus 1, 2 plus 3 and 6 cube plus 5, and even positive integer can be written as 6 cube plus 2 and 6 cube plus 4. Or positive 2 plus 1, 6 cube plus 2 and 6 cube plus 5. Even 6 cube plus 2 and 6 cube plus 4. When we take divisor, okay, जब हम divisor 6 लेंगे तब, okay, now next ऐसा ही एग्जाम्पल और पूछते हैं वो लोग, क्या, show that I given you some questions of example, the board exam they can ask like this also. अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए हैं ऐसा भी पूछ सकते हैं, देख लेना। हाँ, show that any positive odd integer is of the form odd है भाई 4 cube plus 1 and 4 cube plus, they can ask the positive odd integer is of the form 4 cube plus 1 and 4 cube plus 3, where same questions, only this divisor is changed. The place of 6 here, where q is a integer. q क्या है भाई, यहाँ पर integer है। Okay, they can ask
क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम लाइक दिस ऑल्सो। अगर उसको 6q+1, q+3 एंड 6q+5 के फॉर्म में नहीं देना है तो वो 4q+1 एंड 4q+3 के फॉर्म में दे सकते हैं। If they don't want to ask about odd integer, उसको अगर odd integer के फॉर्म में नहीं पूछना है तो वो इवन इंटीजर के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। इवन इंटीजर लिखो भाई 4q एंड 4q+2 के फॉर्म का लिख दो भाई कि कोई भी इवन इंटीजर 4q एंड 4q+2 के फॉर्म। ओके, if they don't if they don't want to ask in the form of 6q+1 and 6q+3 and 6q+5, they can ask 4q+1 and 4q+3. If they don't want to ask about odd integer, they can ask about even integer also. Okay, so be prepared for that also. Okay, उसके लिए भी प्रिपरेशन करो। ऐसा नहीं है कि भाई वो सिर्फ पूछ ले 6q+1 and 6q+, वैसा भी पूछ सकते हैं 4q+1 and 4q+3 also. They can also ask about even integer. Okay, so be prepared for every example. Okay, next question number 3. Question number 3. An army contingent 616 members is to march behind an army band. First of all, we have two parts. Okay, army contingent. How many members in that? 616. And here army bands is there. How many members? 32 members in that. Okay, in parade, we have some army parade. There are two parts. First of all, at the starting band are there, army band. Okay, and second, after that, behind that army band, there are army contingent. Total one contingent is there, and in army band there are 32 members. In army contingent, there are total 616 members. Now, the two groups are to march in the same number of column. तो सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है भाई। देखो यहाँ पर ए है उसकी कॉलम, क्या होनी चाहिए? सेम नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम सेम होनी चाहिए, सेम कॉलम होनी चाहिए। ऐसी रो आप कितनी भी लगा दो तो उससे कोई भी मतलब नहीं, उसको से कोई भी मतलब नहीं है, बट उसको एक कॉलम सेम हो। क्या होनी चाहिए? कॉलम सेम। अब आगे से देखते हो ना भाई, यहाँ से जो देखते हो, आप यहाँ से देखते हो ना, यहाँ से देखते हो ना, आप यहाँ से देखते हो कि आपकी जो सामने हुई एग्जिट आपके सामने, तो वो कॉलम हुई। जो आपके परपेंडिकुलर हो रो हुई। So what is the maximum number of columns in the can march? Maximum number of column कितनी होगी? Maximum is the maximum number of column they can march. See, तो आपको क्या करना है भाई? भाई क्या करना? तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक एग्जांपल, तो आपके पास boys है, something you have one boy, 15 boys.
and girls, right? 6. आपको ये दोनों सेपरेट करवानी है। फिर कैसे? तो आगे गर्ल्स होनी चाहिए और उसके पीछे बॉक्स बॉयज होने चाहिए। यहाँ पर क्या होने चाहिए? गर्ल्स। यहाँ पर क्या होने चाहिए? बॉयज। आपको आगे से यहाँ पर जो भी कॉलम है ना वो सेम रखनी है, जैसे सेम कॉलम। तो इसकी कितनी कॉलम रोज बनेगी वो नहीं पता है, बॉयज की कितनी रो बनेगी और गर्ल्स की कितनी रो बनेगी वो नहीं पता है। आपको पता है कि आपकी कॉलम सेम चाहिए, आपकी कॉलम क्या होनी चाहिए? सेम। भाई क्या करो, अब बनाओगे? चलो भाई खड़े रहो, चलो। बॉयज कितने हैं? 3। एंड गर्ल्स कितनी है? चलो भाई खड़ी रहो गर्ल्स, 2 गर्ल्स खड़ी रह जाओ। गर्ल्स एंड गर्ल्स, 8। 2 गर्ल्स खड़ी रह गई, तो पीछे फिर से 2 गर्ल्स, फिर से 2 गर्ल्स हो गए 6। अगर बॉयज खड़े करोगे बॉयज, तो 2 2 2 2 ऐसे 7 हो गए। एक बॉयज तो रह गया, बाकी 7 2 जा 14, एक बॉयज रह गया। नहीं चलेगा भाई, टोटल कंप्लीट होनी चाहिए, रो एंड कॉलम कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, कैंसल दिस कैंसल, we can't do like this। नेक्स्ट, और कोई बात सोचो तो क्या करें? चलो 3 3 3 3 कर दो। चलो कोई 6 कंप्लीट, बॉयज कर दो। बॉयज 3 10 3 10 3 10 3 एंड लास्ट 1 3। ओके 15, टोटल 15 एंड टोटल 6। ओके 15 एंड 6 कॉलम हुई, 3 कॉलम हुई। गर्ल्स की कितनी रो हुई? 2। हाउ मेनी रोज ऑफ गर्ल्स? हाउ मेनी रोज ऑफ बॉयज? 5। टोटल रो 7। 7 3 are 20, so you have total 21 students। okay, सेम थिंग्स यहाँ पर हमको करनी है। पर देखो भाई यहाँ पर एग्जाम्पल थोड़ी ना ऐसा छोटा है। हियर वी हैव टोटल 616। हाउ मेनी मेंबर्स? 616। एंड इन बैंड 32 men। वो पता था 15 एंड 6, उसमें कितनी कॉलम मिली थी? 3। और इन 15 एंड 6 का आप एचसीएफ फाइंड करोगे ना, एचसीएफ व्हेनेवर यू फाइंड एचसीएफ ऑफ 15, at that time also you will get, आप अगर 15 एंड 6 का एचसीएफ फाइंड करोगे तो भी आपको देगा। मीन्स you can say that you need to find you need to find the HCF of 15 and 6। okay, you need to find the HCF of 15 and 6, and you can say that also we want highest column, largest column से maximum column हो गई। largest means highest common factor। okay, okay, okay। 4 4 maximum number of column we need to find HCF of 616, HCF of 616 to find करना होगा। Therefore now
by Euclid's division algorithm. By Euclid's division algorithm. See, 616 divided by 30. नहीं पता है भाई, करो ना. 616 divided by 32 directly. 32 multiplied by 5. 5 3s are 15, 150. 5 2s are 10, so 110. So 160 नहीं चाहिए. Multiply by 10. 32 multiplied by 10. So 320, we want more. 32 multiplied by 20. 32 2s are 64. We want less. So multiply by 19. Last one. Multiply by 19. You know that 32 multiplied by 20. So 640. If we want less, then subtract 32 from 640. 640 में से 32 माइनस कर दो. आपको क्या मिल जाएगा? 604. 608. Okay, so 32 multiplied by 19. 608. 19 plus 616 minus 608. Answer is 8. क्या मिल गया आपको आंसर? 8. Okay, so plus 8. Now 32 divide by this 8. 32 को 8 से डिवाइड करो. 32 divided by 8. 8 4s are 32. Directly you can write 32 and plus 0. So you get remainder 0. At that time, HCF of 616 and 32 is equals to 8. So 616 and 32 का HCF क्या मिला आपको? 8. Okay everyone? 616 and 32. HCF is 8. Now, so based on that, you can say that maximum number of column in March is 8. Therefore, write last sentence. Therefore, maximum number of column of army contingent and band in parade is 8. This is the maximum number of column 8. जो आर्मी बैंड एंड कंटिंजेंट की पैरेड है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगी? 8. ओके, थैंक यू पार्थ पटेल. थैंक यू पार्थ सर. ओके, so it's your answer. Okay everyone, now students, one simple method. अब देखो, शॉर्टकट मेथड. आपको कब HCF फाइंड करना है और कब LCM फाइंड करना है. जैसे एग्जांपल हो, when you need to find HCF and when LCM. whenever your answer is, अगर आपका आंसर जो भी नंबर दिया है लेस देन है, तो आपको HCF फाइंड करना. योर आंसर जो आपको नंबर दिए है, आपको पता होगा भाई कि कॉलम कितनी होगी. जो आपको 616 नंबर है उससे तो छोटी होगी, लेस देन.
you have number. How many numbers? 616. So your column must be less than 616. So at that time you need to find HCF. And when your answer is greater than the number given in question, जब greater हो गए, at that time you will find LCM. अगर किसी को पता ना चले कि भाई HCF फाइंड करना है या LCM फाइंड करना है, सिंपल, आपको पता है भाई आर्मी बैंड में जो कॉलम है, column, number of column is always less than the number of member. So at that time you will find HCF. Whenever you know that the answer must be greater than the given numbers, then at that time you will find HCM. अगर आपको पता है कि आपका आंसर जो नंबर दिए उससे बड़ा है, तो आप एलसीएम फाइंड करोगे. आपको पता है कि आंसर छोटा है, तो आप एचसीएफ फाइंड करोगे. ओके एवरीवन? ओके स्टूडेंट्स. Everyone, now lecture is over. Okay, so our exercise 1.1 question number 1, 2 and 3 are completed. The next lecture we will solve question number 4 and 5. Okay students, bye everyone, goodbye students.